स्क्रीन टाइम वैसे बच्चों का नहीं बड़ों का भी होता जा रहा है ज़्यादा, तो ये दोनों पे ही मेरा ख्याल है कि हम बात कर लें. Assalamu alaikum everyone. So my topic is the effect of screen time on child's development. बड़ों की मैं नहीं बात कर सकती हूँ. I'm a pediatrician, sorry. अच्छा, तो basically what is screen time? Screen time is the time spent on the devices which has a screen. So TV, mobile, computer, video games, everything. The time we are living in now, our children are basically immersed in a pool of information and technology. But it has been seen that if we use screen time with moderation and it is properly controlled, then it has a very positive effect on the development of our children, right? And we know all that. So it has, provided learning opportunities, language, social skills, school work, information, knowledge, and entertainment. But today we are going to focus on the negative impact on development of the child due to screen time. So studies have shown actually that high increased use of screen time affects the microstructure of the white matter of the brain, and that supports higher mental function. Higher mental function say I mean intelligence, learning, how the kid will do in school, language development, again behavior is affected by it. So for a baby's brain to develop, one thing is very important: human interaction. Especially like Dr. Saab said, the first 2 years of life, human interaction is the most essential thing for a baby's growing brain. And until the baby develops language, all the communication is non-verbal, right? So it is the non-verbal cues which the baby takes and then develops its own reactions. And what happens is the baby sees a mother's face is angry, happy, sad, and that's how reacts to emotions. And what happens is that agar we give mobile in a hand of an 8-month-old baby, the brain is constantly absorbing images. What it does, that it lowers the attention span, it lowers the focusing, the baby is unable to control the impulses, and basically is unable to read the face, right? Always, agar aap ye dekhein, कि if the child is on, even for older kids, for them, playing with the peers, अपने friends के साथ and with the parents, जो critical thinking and problem solving and if they get into some difficulty, what they have to do at that time, this all comes with human interaction. It cannot come with, if the child is sitting with a mobile phone in his hand and just getting those images passively to the brain. So that is a very important thing. And of course, what happens is that then they are delayed in their social skills, human interaction की आदत नहीं है बिल्कुल भी. So what happens is कि वो social skills, emotional skills बिल्कुल ही delayed हो जाते हैं इन बच्चों में. Other negative health effects, sleep is one of the main things. It has been seen that high screen time affects sleep. And so we know that the blue lights which emits from the screen, it decreases the melatonin. So going to sleep is harder, and then the other things, the duration of the sleep and the quality of the sleep, and several studies have been done on it, and it has been seen that it affects, if they are using too much screen, it affects their sleep. Obesity is another thing which is highly linked with high screen time, and it has been seen, studies have been done, and it has been seen that if children see more than 2 hours of digital media or whatever screen time, then they have a tendency to be obese.
sorry. And then, like I told you before, that it affects on their mental health. After COVID, we have seen actually that there has been such a great increase in the mental health problems. We have been seeing so many patients with all kind of mental health problems. And one of the main reason is that the bachas were at home, they were on their screen, they were doing school things on screen too, but they had nothing else to do, so they were on online, and that was one of the things which has done that. The other online risks which we all talk about is that if they are on screen all the time, the online risks is there. It is a reality, and they can go into some website which is not appropriate to watch, or they can, we know that predators are everywhere on the social media, on the gaming platforms, for abuse, for money, for, gathering information. Cyberbullying, we've been talking about it. Pehle jo hai, wo bullying used to be on grounds, now it is online. So the parents have to be very aware of that because cyberbullying does affect their mental health. Then again, privacy concerns and children posting their pictures, posting personal information on the online, that is another very concerning thing, because we have to tell them that this is something which you have to be very aware of. Once it goes there, it cannot be retrieved back, and it can harm them later in their life. So what is the suggested screen time by age? This is, so now the recommendation is that no screen for babies below 18 months of age. But they can video chat with their family, with their grandparents, and this is one of the things I'm doing every day because I'm a new dadi, so I really love that. Then from 18 to 24 months, a little bit short duration screen time is allowed, but it is only on supervision, 2 to 5 years, they can, watch TV or whatever. Screen time is, the recommended time is 1 hour in 24 hours. And for 6 years and older, because previously this used to be, we used to say 2 घंटे से ज़्यादा पूरे दिन में नहीं करना है, but this has been changed. And now it is recommended that you make a personalized plan for your kids, because now the kids are doing a lot of stuff online. So that is important too, apart from their school stuff, extracurricular stuff, and doing different things. So we have to make a personal plan, but in that personal plan, what we have to do is that make sure that there is 8 to 12 hours sleeping time. There is 1 hour physical activity time, and then there is some time in which there is no media allowed. So that is also very important. So tips for the parents. This is, I think, my second last slide. You have to be this, we have been talking about it, you have to be a role model. So if you have a mobile phone in your hand 24 hours a day, don't expect your child not to follow that. Of course, they watch you and they do exactly the same thing. So be a role model. Make your own family media plan. And when you are making a media plan, make sure that you include your kids in it. Tell them what are the good and the bad things about being online and being on screen, and let them give you ideas so that they feel responsible that this plan was made by me too, and they will follow it then religiously. Don't be afraid of setting limits. I have seen our parents are very afraid. They don't do that. You have to set limits, because these kids, they don't know. You are the parent for that, the maqsad, right? So do use parental settings. Do use programs like Common Sense Media, so that you can keep a check on what the child is watching, because sometimes it can say it is a very good educational app,
you don't know unless you have seen it, right? Just labeling it as a good educational app does not make you allow your child to just go ahead and see it. And then there should be screen-free zones in the home, screen-free times, meal time should not, that nobody should have mobile, even the parents. In our home too, we have made it a rule, no phone calls during meal time. And then in the bedroom again, the kids' bedroom, there should not be any kind of media devices in which they are, because of that, they won't sleep. So this is the last slide. I think co-viewing is very important. It has been seen in kids for like 2 years and older, 2 to 3 years, it has been seen those kids who were sitting with their parents and the parents were talking with them along with, watching an educational program, they retain the things more than when the child is watching a TV program alone. So be careful. Try to give your more and more time with your child. Talk about digital footprint, we have already said that you have to tell them, you have to let them know, this is another, social media is like an environmental hazard for us too. So हम गाड़ी चलाने बच्चे को जब भेजते हैं तो we tell them the rules, right? So we have to let them know कि what is, how to be a good citizen, what are the things we have to be aware of, and they need to make sure. And then pay attention to their mental health, because they will see, you will see signs if they are angry or they are, sad. Just don't ignore it. Just make sure that you are doing something with them. And then, of course, alternative ideas to hazaron, and they really need face-to-face time for their growth and for their development. So do give them your time. Thank you. Thank you very much, Dr. Khishwar. Special thanks for the tips for the parents. So we have to limit our own screen time, or we have to set some rules and regulations in our homes. And how we can create a positive discipline environment in our home, I ask Mrs. Mehak Naeem to give her remarks about it. Assalamu alaikum ji. When we're talking about positive disciplining, it's important to understand what is harsh disciplining. So, जब हम harsh disciplining की बात करते हैं, तो we also have to understand कि how problematic it is in Pakistan. अब according to data, multiple indicator cluster survey जो हुआ था, उसमें हमने ये देखा है कि around 80% of our population जो बच्चे हैं, उनको they experience harsh parenting. This harsh parenting does not only restrict to slapping and, little bit of woe. It goes on to putting iron rods on a child and goes on to things that can be categorized as physical abuse. 80% of children in Sindh, 81% children from Punjab, 82% children from KP, and 85% of children from Gilgit-Baltistan, in a very large sample, have shown that they have experienced very harsh parenting practices in Pakistan. In our own research, जो हमने 3-4 साल पहले जब हम कोविड के दौरान में हमने research की थी, some of the researchers are already present in this room. It was a multi-center research conducted in Peshawar, Karachi, and Lahore, and this was during peak time of COVID. और ये OPD के हॉस्पिटल्स के अंदर जाके हमने पेरेंट्स के साथ ये रिसर्च जब की थी, तो it was not only restricted to certain class, but it was like एक काफ़ी representative sample था. और उसमें भी हमने देखा कि हमारे 66% of parents ने कहा कि चीखने के अलावा मुझे समझ ही नहीं आती मैं बच्चे को कैसे समझाऊं. और ये कोविड से उन्होंने कहा कि पहले हमारे ये हालात थे, कोविड के दौरान वो 66 से 68% हो गया, तो तकरीबन हमारे ज़रा ज़्यादा हुए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ. और 53% ऑफ पेरेंट्स सेड कि मारने के अलावा हमें कोई तरीका ही नहीं आता बच्चे को समझाना कि कैसे हम समझा सकते हैं. सो व्हेन वी आर लुकिंग एट दिस डेटा, इट्स ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इशू इज़ नॉट जस्ट नंबर्स. अब मैं थोड़ा सा मोड हम चेंज करते हैं. Why do you think a parent hits a child? From the audience, anyone? A mother hits a child. Yes? Yes.
پیرنٹ کی اپنی فرسٹریشن ہے, ٹھیک ہے, کس وجہ سے ہے؟ ہم نے اس ٹیبل پہ پچھلے 1 گھنٹے میں بہت ریزنز ہم نے ڈسکس کیے ہیں, ٹھیک ہے, انکلوڈنگ دا فیکٹ دیٹ دیر از اوور پاپولیشن ان دس کنٹری, دیر از پاورٹی ہے, ہماری ہیلتھ کے انڈیکیٹرز کے بہت پرابلمٹک ہے, مینٹل ہیلتھ آف دا مدر از ویری امپورٹنٹ. وین وی ٹاکنگ اباؤٹ چائلڈ ریئرنگ وی کیپ ٹاکنگ اباؤٹ بچہ, لیکن سم ہاؤ ان دا پکچر وی forget the mother and the mother's own mental health. We've seen that there is a very big number of depression and anxiety amongst new mothers. اور اگر وہ سوشل سپورٹ کا فیبرک مسنگ ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی دا مدر آلریڈی فیلز اے لاٹ آف اسٹریس وین ریئرنگ اے چائلڈ. اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ مدر اتنی اوور برڈنڈ ہے کیونکہ وہ ایک ایسی فیملی میں رہ رہی ہے کہ شاید اس کو سپورٹ سسٹم وہ پرووائڈ نہیں ہو رہا. وہ نئی ماں ہے, اس کو ایکچولی کچھ سمجھ نہیں آ رہی بچے کو پالنا کیسے, لیکن اس کے ہاتھ میں ایک بچہ آ گیا ہے جو اس نے کہہ دے کہ یہ بچہ اب تمہاری رسپانسبلٹی ہے. اس سے پہلے اس کو کسی نے یہ بھی نہیں بتایا کہ بچے کو مارنے کے علاوہ یا کس طرح اس سے بات کرنی ہے, ٹھیک ہے. ہم ٹھیک ہے کچھ ہمارے سوشل کلچرل فیبرک کے اندر یہ ہے کہ ہم بچوں کو تھوڑا تھوڑا اپنے نیسز نیفیوز کو سنبھال لیتے ہیں, بٹ پیرنٹنگ از اندر بال گیم. اینڈ فار دیٹ we've seen that has anyone really heard about parenting program before the pregnancy or during the pregnancy for a mother in Pakistan? Not really. باہر سنا ہے, ہمارے یہاں کہیں کسی نے پیرنٹنگ پروگرام کے بارے میں کوئی سنا ہے؟ سو ان فیکٹ ہماری ماں کمپلیٹلی ابھی آتے ہیں اس کے اوپر ہی. If you're talking about the parenting, right, I think it's both gender job. And about the parenting program that you're talking about before or after pregnancy, throughout the world, I think parents both are involved equally. I agree. And if you're talking about depression and anxiety, I think a father, even if he wishes to disclose, he doesn't let his guard down. Due to societal, due to cultural values. Why aren't we talking about that? That's a very, very valid point. It's actually where we were coming back to it. Lekin, unfortunately, the dynamics of the society we're living in, especially when we go towards the lower strata, automatically ایک assumption ہو جاتی ہے کہ child rearing اور child disciplining کی جو ہے نا وہ ماں کی ذمہ داری ہے. Like, although you're right, it is very important to understand that the father has an equal part to play. And parenting programs, when we're looking at, جس طرح رقیب نے انہوں نے ڈسکس کیا کہ parenting programs میں fathers کا رول بہت important ہے. اب I really want you to imagine for one moment two working women. One woman who is basically working 9 to 5 in a job, has to leave her child in a school or a daycare or wherever, comes back, has to make sure that there is food on the table, there is work. Then also, کیونکہ ہماری ڈائنامکس ایسی ہیں کہ کچھ جگہوں پہ کافی جو مائیں ہیں وہ جوائنٹ فیملیز میں رہ رہے ہیں, فادرز جوائنٹ فیملیز میں رہ رہے ہیں. اب ماں کے پاس کیا فل ٹائم جابز ہیں؟ ایک وہ صبح 9 to 5 کام کرتی ہے, پھر وہ گھر آ کے سارا کام کرتی ہے جو ہاؤس ہولڈ رسپانسبلٹی ہے, اور پھر وہ اپنی فیملی ان لاز کی ایکسپیکٹیشنس کو میٹ کرنے کے لیے شی از ورکنگ 3 times. اینڈ وین شی از ورکنگ 3 times, غصہ کہاں پہ نکل رہا ہے؟ غصہ بچوں پہ نکل رہا ہے. سو while we're talking about positive parenting and we're talking about setting these boundaries in homes, we really have to understand the dynamics of this culture where we are putting a lot of burden on the mothers while we're not providing enough adequate support and material to them. دوسری چیز جس کے اوپر میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی ماں اسٹیپ اپ کر کے, یا ماں یا باپ اسٹیپ اپ کر کے یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو نہیں مارنا, میں نے صرف پازیٹیولی اس کو سمجھانا ہے, کانورسیشنز کرنی ہے, سیٹنگ باؤنڈریز کرنی ہے, اس کا کیا ری ایکشن آتا ہے؟ اینی ون فرام دا آڈینس اور اینی ون؟ یا ود ان دا فیملی, فرام دا سوسائٹی.
this is normally the reaction is अच्छे भले घरों में I'm not talking about बेचारे जो उनको वैसे ही नहीं समझ के वो frustration के किस level के ऊपर हैं, लेकिन जो समझते भी हैं उनको भी ये समझते हैं. So ये तो बहुत कहते हैं vicious सा एक cycle बन गया है पूरा एक मुआशरा, जिसके अंदर हर level के ऊपर डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हमें नज़र आते हैं, लेकिन साथ में हर लेवल के ऊपर जैसे आप कर रहे हो तो हमें काम भी करने की ज़रूरत होती है और गुंजाइश हर जगह मौजूद है. सो आई थिंक कोई भी फादर जो या मदर दोनों ही, बल्कि ख़ास तौर पे फादर, अगर वो अपने बच्चे के साथ बातचीत का अंदाज़ अपना के चलने की कोशिश करता है तो उसको काफ़ी जो है फेस भी करना पड़ेगा अपने घर वालों और इर्द गिर्द के दोस्तों से. यार तू की लगा रहना है, इस तरह कौन करता है, रख के मार एक, यू नो, थिंग्स लाइक दैट. तो वो ये काम नहीं करती हैं. तो उसके लिए भी सपोर्ट सिस्टम, माँ बाप खुद ही एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनेंगे तो ही अपना बच्चा उस फैमिली के अंदर जो भी इंट्रिकेट फैमिली स्ट्रक्चर है, इकट्ठे रह रहे हैं या अलग रह रहे हैं जैसे भी, और एक सोशल सर्कल के अंदर भी, दोस्तों के एक सर्कल के अंदर भी उनको स्टैंड लेना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा. और सिर्फ खड़े ही नहीं होना पड़ेगा, दूसरों को समझाना भी पड़ेगा कि क्या सही तरीका है. और उसमें चाहे आप दीन से मदद लें या दुनिया के कवानीन और असूलों से मदद लें, दोनों ही चाहिए होंगी. थैंक यू सो मच. मैं भी एक कमेंट करना चाहूँगी. जैसे ये बड़ा अच्छा आपने किया है महक ने. अच्छा देखें, बड़ी कॉमन सी, जैसे महक ने कहा कि अगर फादर ये सोच ही लेता है कि मैं बच्चे से बातचीत के ज़रिए बात करूँगा, तो सबसे पहले तो माँ ही आ जाती है कि तुसी तो बच्चे ही बिगाड़ देने हैं. बाप का एक रोब होता है. मैं सारा दिन, मैं बहुत इस तरह की बातें सुनती हूँ कि मैं तो कहा हुआ कि तुम्हारे अब्बू आएंगे तो तुम्हें ज़रा पूछेंगे, तो तुसी आके नाल डिस्कशना करना शुरू कर देती है, तुसी एज कर देता है. माँ ही शुरू हो जाती है बाप को कहना कि आपने तो बच्चे बिगाड़ दिए हैं और जो है इनको ज़रा डांट के रखें ताकि इनको पता लगे इनको क्या करना चाहिए. एग्जैक्टली. सो हमारा एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि, और ये बहुत ज़्यादा रिसर्च से भी सजेस्ट करता है कि क्योंकि हमारे पास इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा जो है ये ट्रांसफ़र हुआ हुआ है. ठीक है, इट्स समथिंग जो हमें गिफ्ट मिला हुआ है जैसे ही हम पैदा हुए हैं, कि हमें पता है कि हमारी वायरिंग में ये है कि हमें मार पिटी थी, इसकी वजह से हम ठीक हैं. और एक्चुअली इवन फॉर अस एज यंग मदर्स या एज यंग पेरेंट्स, जब हम इस नोशन से निकलने की कोशिश करते तो अंदर से कहीं से आवाज़ आती है, यार दो ही लगा दो, सुकून हो तो मिल जाए. चलें, थैंक यू. But so I'm just going to wrap it up in 2 minutes. So what we really have to, when we're looking at positive disciplining, we have to look at harsh parenting. There is a lot of research that's already done on it, but जहाँ पे हमारी to create that enabling a very good environment for the child, we need to make sure कि जो हमारे pediatricians या physicians हैं या doctors हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या लेडी हेल्थ वर्कर्स जहाँ पे जा रही हैं, वहाँ थोड़ी बहुत वो अवेयरनेस रेजिंग कर लें, क्योंकि वही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उस माँ का. There can be a lot of awareness, there can be a lot of advocacy, but what we really also need to work on is building parenting programs for mothers before they give birth. So adolescents may, before the child, mothers and fathers, so that they can become better parents without like trying to break off that wiring जो हमारे अंदर already हुई भी है. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच महक. अब एंड पे हम नादिया जमील से पूछ लेते हैं कि व्हाट शी wants to say about what advice should be given to the parents to be. क्या आपके ख्याल में कि क्या पेरेंट्स को गाइडेंस देनी चाहिए? Thank you for inviting me and having me here and allowing me to hear such wise and sage advice. As a parent and a mother, I've been videoing and writing down notes. Parenting, तो हमारे बच्चे हमारे लिए बहुत ख़ास हैं, सबके बच्चे बहुत ख़ास हैं, बट एक बच्चा और है जो कि मैं देखती हूँ कि उसका हम ज़्यादा ख्याल नहीं रखते, और वो हमारे अंदर जो एक बच्चा है वो बच्चा है. मैं 29 साल की थी जब मैं माँ बनी. मैंने कहा कि अच्छा मैं बल्कि 30 साल की थी, 29 साल की थी जब मैंने शादी की. तो मैंने कहा अक्लमंद तो हो गई होंगी अब तक, बट आई मेड मिस्टेक्स. जिस तरह ये पेरेंटिंग प्रोग्राम की बात महक कर रही हैं, आई मेड मिस्टेक्स, अली मेड मिस्टेक्स, वी ऑल मेड मिस्टेक्स. बट जब मैं इन रेट्रोस्पेक्ट देखती हूँ, सबसे बड़ा मिस्टेक क्या था? सेल्फ पेरेंटिंग.
ہم اپنے آپ کو پیرنٹ نہیں کرتے. یہ جو ریئیکشنز ہیں, تھپڑ مار دینا, غصہ کر دینا, گاڑی کے باہر ٹافی کھا کے ریپر پھینک دینا, سگریٹ کا بٹ پھینک دینا, یہ ٹاڈلر ریئیکشنز ہیں. یہ جو ایک ریئیکٹیو ایموٹیو رسپانس ہے, یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں, مطلب 3-4 سال کی عمر تک بچے نا بالکل ریئیکٹ کرتے ہیں. بھوک لگی رونے لگ گئے, غصہ آیا تھپڑ مار دیا, ان کو سکھانا پڑتا ہے. چیز پھینک دی کہیں پہ نہیں, ان کو سکھانا پڑتا ہے ٹوکری میں پھینکیں. تو ہم خود, جب میں دیکھتی ہوں ایڈلٹس post 18, 20-year-olds, 30-year-olds, 40-year-olds, 50-year-olds, men and women, ہم پیٹر پینز کی طرح بڑے بڑے بچے پھر رہے ہیں. کیونکہ ہمیں کبھی یہ چیز نہیں سکھائی گئی کہ آپ اپنے آپ کو کیسے پیرنٹ کر سکتے ہو, کہ آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ کتنی اہم ہے کہ آپ اس کو قابو میں رکھیں اور قابو میں لانا سیکھیں والدین بننے سے پہلے. مینٹل ہیلتھ کی بات ہم کرتے ہی تب ہیں جب ڈپریشن کی بات آ جائے یا سوئسائڈ کی بات آ جائے. کیوں؟ جب ہم فزیکل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو ہم فزیکل ہیلتھ کی بات ہم چاہتے ہیں کہ ہم تندرست و توانا رہیں. اگر ہم ہر روز تھوڑی سی ورزش نہیں کریں گے اور کھانا نہیں صحیح کھائیں گے تو ویل گیٹ سک. مینٹل ہیلتھ از دا سیم. مینٹل ہیلتھ از ایگزیکٹلی دا سیم. اگر آپ روز وہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ, وہ ٹولز اپنے آپ پہ استعمال نہیں کریں گے جو آپ کی مینٹل ہیلتھ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, تو مینٹلی آپ بیمار ہو سکتے ہیں. وتھ آل آف اس, آئی واز اے وکٹم آف ڈپریشن اینڈ آئی ہیڈ ٹو ہیو میڈیکیشن فار اٹ. اینڈ آئی لرنڈ اس وقت دا گولڈن رول آف سیلف پیرنٹنگ, کہ چھوٹی نادیہ جو اندر سے بچپن میں جو بھی میرے ساتھ ہوا, جو میرے ویدر اٹس ٹرانس جنریشنل, جو میرے ساتھ بچپن میں اگر کچھ ہوا ہو, چھوٹی نادیہ کے جو رسپانسز ہیں, جب وہ گھبرا جاتی ہے, جب وہ ناراض ہو جاتی ہے, جب وہ کسی چیز سے ڈر جاتی ہے, وہ کسی سچویشن میں سہم کیوں جاتی ہے, وہ کسی سچویشن میں لوگوں کو پلیز کرنے کی کوشش کیوں کر لیتی ہے کہ سب نے خوش رہنا ہے, میں نے سب کو خوش رکھنا ہے, اپنے آپ کو نہیں. میں کیا ہوں, مطلب میں ٹھیک ہوں, سب ٹھیک ہیں تو میں ٹھیک ہوں. تو یہ جو چھوٹی نادیہ ہے, اس کو ہم نے کبھی پالنا, نرچر کرنا نہیں سیکھا. اٹ از ناٹ پاسبل ان مائی اوپینین ٹو بی اے گڈ پیرنٹ if you do not know how to self-parent. It is not possible to be a responsible parent if you are not responsible for your own responses, for your own reactions. You know, a lot of the conversation we're having, violence comes from learning how to regulate your own emotions, regulate your own responses, learning to observe and listen to yourself. اپنے آپ پہ دھیان دیں اور اپنے رسپانسز پہ دھیان دیں کہ ہاؤ ڈو یو لسن. ایکٹیو لسننگ از سم تھنگ آئی ایم سیئنگ ایون ہیئر. ایکٹیو لسننگ از ناٹ سم تھنگ وی ڈو. وی ڈونٹ لسن. وی ڈونٹ لسن ٹو ایچ ادر. وی ڈونٹ لسن ٹو آر چلڈرن. وی آر بزی گیونگ آر اون opinions. Sometimes stop and listen. Listen to your children and listen to yourself. Observe yourself. Why am I reacting like this? That quiet time, جو quiet time ہم کہتے ہیں بچوں کے لیے بھی بڑا ضروری ہے, وہ ماں کے لیے اور باپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ جائیں اور that even if that means going to therapy or if that means sitting in prayer or sitting in meditation. This is something I teach children in shelters, and my children are not from elite homes, but I am teaching them how to parent themselves. نادیہ جمیل کی ایموشنل ہیپینس کا ٹھیکہ کسی نے نہیں لیا ہوا. میں کسی کی وجہ سے سیڈ نہیں ہو سکتی, میں کسی کی وجہ سے خوش نہیں ہو سکتی. یہ میری اپنی رسپانسبلٹی ہے. میرا ہسبینڈ میرے پہ چیٹ کر رہا ہے, میں کیا کروں, سم کلائنٹ از ٹیلنگ می دیٹس یور ہسبینڈز پرابلم. واٹ از یور پرابلم؟ ہی از ناٹ یور پرابلم. یور رسپانس از یور پرابلم. یو وانٹ ٹو اسٹے ان دا میرج, اسٹے ان دا میرج. دیٹ از یور ڈیسیژن. But if you want to stay in the marriage with the man who's cheating, take on that accountability, be responsible for yourself and find other things that will make you happy. And you know, if that is a choice, make it like an adult. میں کیا کروں, میں یوں, ارے take responsibility for yourself. Listen to yourself and listen to people who you know can be a resource for you.
If that means a good therapist, if that means a good life coach, if that means listening on YouTube, जैसे कि डॉक्टर किशोर एनाम ने कहा, there's great learning to be done, but listen and observe. अपने आप को observe करें, मेरे क्या reactions हैं, मैं ट्रिगर किस चीज़ से होती हूँ और मैं इन ट्रिगर्स से बच कैसे सकती हूँ. ट्रिगर जो है बंदूक का बहुत छोटा सा हिस्सा है. बंदूक का जो असली हिस्सा है वो बारूद है, वो गोली है, वो तो हमारे दिल के अंदर है. ट्रिगर्स बाहर से हैं, जो भी ट्रिगर है आपको बाहर से मिलेगा. इस बात से मुझे गुस्सा आ गया, उस बच्चे ने ये कर दिया, उसने सारा कुछ तोड़ दिया, उसकी वजह से मेरी सांस, ऑल दिस ट्रिगर्स आर कमिंग बाहर से. लेकिन बारूद आपके सीने में है. अपने बारूद पे अपना ध्यान डालें और सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ पेरेंटिंग पे ध्यान डालें. देन यू विल लर्न हाउ टू फोकस ऑन योर children in the same way. थैंक यू नादिया, आपने बड़ी अच्छी बात की है okay. कि छोटी नादिया को पहले जो है हमें समझाना पड़ेगा. और इसी से ये फिर हमें लेसन मिलता है कि पेरेंटिंग की जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़रूरी है. अभी तक हमारे यहाँ जिस तरह ये कंक्लूड अगर हम करें कि जो पॉजिटिव पेरेंटिंग है या पेरेंटिंग स्किल्स हैं, ये जो है हम सब के लिए एक नई जो है ये कॉन्सेप्ट है. और इस कॉन्सेप्ट की जो है अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, अपने जो है कल्चर को देखते हुए, अपने लिमिटेशंस को देखते हुए. और इसके लिए हमें ऐसे पेरेंटिंग जो है मॉडल्स और मॉड्यूल्स जो हैं वो डिज़ाइन करने हैं जो हर लेवल पे, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए भी हों, जो कम्युनिटी वर्कर्स के लिए भी हों और जो पेरेंट्स के लिए भी हों. तो ये आज की जो वर्कशॉप रही है, इससे जो है आप लोगों ने भी जो है काफ़ी जो है मुस्तफ़ीद हुए होंगे. और जो एक हमें जो की पॉइंट्स मिले हैं वो ये है कि जो बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो खाली जो है ख़ुद से ही नहीं हो जाती. उसके लिए जहाँ न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वहाँ नर्चरिंग की भी ज़रूरत है. और इस नर्चरिंग और न्यूट्रिशन के लिए सेंसिटिव पीरियड्स हैं, और अगर उन पीरियड्स में हमने इंटरवीन नहीं किया तो फिर मुश्किल होती है बच्चे की बिहेवियर या डेवलपमेंट को जो है वो इम्प्रूव करना. तो उसमें हमने ये पॉइंट देखा है कि फर्स्ट 1000 डेज़ ऑफ लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली जो है बात हमने ये की है कि अगर हमें अच्छे बच्चे जो है कौम को देने हैं तो हमें पहले जो है वो अच्छे माँ बाप बनना पड़ेगा. और अच्छे माँ बाप हम, जैसे अभी बात हो रही थी, तभी बन सकते हैं जब हम खुद सीखें कि पेरेंट बन के हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं. और उसके लिए भी टाइम पीरियड, जिस तरह पहले ये डिस्कशन पे ये हुआ कि बिफोर बिकमिंग द पेरेंट, कि आप जब पेरेंट बनने का सोच रहे हैं, दिस इज़ द राइट टाइम कि आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जा रहे हैं उसके बारे में आप देखें, क्योंकि बीइंग पेरेंट ब्रिंग सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो फिर उसके लिए हमें जो है वो काम करना चाहिए. तो अब इस वर्कशॉप को कंक्लूड करने के लिए मैं प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब से कहूँगी कि वो आएँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए भी और कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए भी. थैंक यू वेरी मच.